ओके, तो आज हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है और ये जो न्यू चैप्टर है इसका थोड़ा सा बेसिक्स हम लोगों ने जब हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात कर रहे थे तब हमने देखा था दैट देयर इज सम फोर्स which acts between two charges or more than two charges at rest. उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट? तो इजी है. This chapter is really easy and very important, keeping in mind, keeping in view state board, JEE, NEET, CET, हर एक point of view से ये important है. So we will be talking about electrostatics in detail from today. मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इलेक्ट्रो मतलब इट कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन. जब हम लोगों को पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस ऐसा कुछ होता नहीं है तो हम लोग चार्जेस को इन जनरल इलेक्ट्रो बोलते थे. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिक्स ऑफ चार्जेस विच आर एट रेस्ट. तो जब चार्जेस रेस्ट पे होंगे स्ट्रिक्टली उसकी बात होगी. क्यों? क्योंकि अगर चार्ज मूव होने लगा तो दैट विल बिकम पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देन मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट अ करंट. और एक चीज है, when charges move they also generate magnetic fields. तो वो मैग्नेटोस्टैटिक्स में जाएगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जाएगा. सो इन दिस चैप्टर वी विल बी स्ट्रिक्टली talking about charges at rest, right? So electrostatics deals with static electric charges, the forces between them, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है electric charges do exert force on each other, राइट? और वो फोर्स जो है बिकॉज फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी तो कुछ डायरेक्शन भी होगा, हम उसका भी बात करेंगे, राइट? देन also, so because today is the first lecture post Deepavali and this is the first lecture of electrostatics, तो बेसिक्स से स्टार्ट करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. सो द आइडिया इज प्रीटी सिंपल. हमारे पास एक चार्ज है, लेट अस से Q1, राइट? इस चार्ज के सराउंडिंग में अगर मैं दूसरा चार्ज लाता हूं Q2, then Q2 will experience a force due to charge Q1. मतलब हो क्या रहा है कि हमारे पास एक स्टैटिक चार्ज था Q1, हम दूसरे चार्ज को लाए और एक जगह पे रख दिया, मतलब ये भी स्टैटिक हो गया, नॉट मूविंग. बट दिस चार्ज Q2 experiences a force. अब क्वेश्चन ये है कि why this charge Q2 is experiencing a force. तो हम लोग ऐसा बोलते हैं there is something in the surrounding of every charge due to which other charge will experience a force. So in this chapter we will be talking about this surrounding region. एक चार्ज का जो सराउंडिंग रीजन है जहां पे दूसरा चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. तो in this chapter we will also be talking about electric fields. Then there is something called as electric potential. वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे what is electric potential. But since this is first lecture of electrostatics, we should roughly know कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. तो नंबर 1 we will be talking about charges at rest. Number 2 we will be talking about force between charges at rest, right? Number 3 we will be talking about source of this force, that is electric field. Number 4 we will be talking about electric potentials and आगे जाके potential energy भी आएगा, right? So this is sufficient to describe. So we'll start with introduction. And then we'll proceed with further topics. बहुत easy है, introduction में कुछ लिखना नहीं हमको ज़्यादा. We just have to mention कि ये electrostatics मतलब क्या है और हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. So pretty simple thing, as I told you, electrostatics.
Electrostatics deals with static electric charges, the forces between them, and the effects produced by the charges in the form of electric field, electric fields, and electric potentials. राइट, तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना काफी है. यू शुड जस्ट नो कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत फ्रिक्वेंटली आएंगे आगे जाके. तो अभी हम लोग फोर्स क्या होता है, फील्ड क्या होता है, ये सब तो ठीक है, इसकी तो बात होगी आगे जाके. बट देन वी शुड नो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. व्हाट डू आई मीन द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? लेट मी टेल यू विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल. बहुत सिंपल, फिजिक्स मतलब रियल लाइफ है, तो हम रियल लाइफ से ही बात करेंगे. लेट अस से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, या फिर बेटर मेरे पास एक बकेट है. इस बकेट का खुद का कोई मास नहीं है, राइट? Then I put one ball here with mass m1. I put another ball here with mass m2. Then I am putting third ball with mass m3. Then the question is, what is the total mass of this bucket now? So of course, total mass of the bucket is m1 plus m2 plus m3. Simple है, right? By analogy, यह तो masses की बात थी. इसका मतलब masses are additive in nature. जितने बॉल डालते जाओगे उतना उस सिस्टम का, अब बकेट को मैं हटा के मैं सिस्टम बोल दूंगा, राइट? तो दिस इज हाउ यू शुड प्रोसीड. मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया था, तो कंसीडर अ सिस्टम ऑफ एन मासेस. यहीं से डर जाते हैं स्टूडेंट. सो यू हैव टू टेक इट टू अ बेसिक लेवल. वी हैव अ बकेट जिसका मास नहीं है, फिर हमने पहला बॉल डाल दिया, m1 मास, दूसरे का m2 मास, तीसरे का m3 मास, ऐसे मैंने n मासेस ले लिए, राइट? तो व्हाट इज टोटल मास? m1 plus m2 plus m3 mn. अब ये फिजिक्स में अच्छा नहीं लगता बोलना कंसीडर अ बकेट, नहीं, फिर हम बोलेंगे कंसीडर अ सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ n मासेस. हमको यहाँ पे मासेस की नहीं, यहाँ पे चार्जेस की बात करनी है. फिर ये मैं क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज आई हैव टू कंपेयर. तो व्हाट वी नो इज masses are additive in nature. तो let me now replace this bucket by a conductor, right? जैसे कि एक प्लेट ले लिया, एक स्फीयर ले लिया, एक सरफेस एरिया ले लिया हमने, राइट? तो अगर मैं एक लाइन पे चार्ज डालता हूं तो उसको मैं बोलता हूं लीनियर चार्ज, है ना? मैं एक सरफेस पे चार्ज डालता हूं तो उसको बोलता हूं सुपरफिशियल चार्ज या फिर सरफेस चार्ज. मैं एक वॉल्यूम के ऊपर चार्ज डालता हूं तो मैं उसको बोलता हूं वॉल्यूम चार्ज. सिंपल. बट इन एनी केस, हमारे पास एक स्फीयर है, मैंने यहाँ पे पहला चार्ज डाल दिया Q1, देन दूसरा चार्ज डाल दिया Q2, देन तीसरा चार्ज डाल दिया Q3. तो द क्वेश्चन वाज वेदर दिस चार्जेस also add up similarly to masses. So yes, charges are also additive in nature. The total charge is Q1 plus Q2 plus Q3, जितने भी charges आप डालोगे, right? तो जैसे masses, basic nature of masses is additive, वैसे charges भी additive है. But there is something which we are missing. हमने क्या मिस कर दिया? masses नेगेटिव नहीं होते. सुना है क्या कभी मेरा मास नेगेटिव 10 किलोग्राम है? ऐसा सुनोगे भी नहीं, बिकॉज मास इज नेवर नेगेटिव. बट चार्जेस, यस. तो चार्जेस आर नेगेटिव अल्सो. तो जब मैं चार्जेस का एडिशन करता हूं, जब मैं अलजेब्राइक सम करता हूं, then we have to consider whether the charges are negative or positive. So we have to take into account sign also, whether it is positive or negative. Example, मैंने एक चौथा चार्ज डाल दिया यहाँ पे, and that fourth charge is negative Q4.
तो मुझे यहाँ पे अलजेब्राइक सम करते वक्त मुझे -q4 लिखना पड़ेगा। So that is one basic difference between masses and charges। मैं क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि इसके बाद मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा ग्रेविटेशन पे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन शुड बी स्टडीड साइमल्टेनियसली। क्यों? क्योंकि फोर्सेस का फॉर्म सेम है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म सेम है, फॉर्मूला सेम आता है। मतलब ओनली बेसिक डिफरेंस इज कि जब मैं ग्रेविटेशन की बात करता हूं तो masses आर नेवर नेगेटिव, मतलब फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। कभी सुना है कि अर्थ एंड मून आर रिपेलिंग ईच अदर? कहीं सुनोगे भी नहीं। आप बोलोगे अर्थ एंड मून अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ masses and inversely proportional to square of distance between them। But in charges you may have attractive as well as repulsive forces। तो हमको एग्जैक्टली सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पता होना चाहिए। तो masses are additive in nature, charges are also additive in nature, but masses are always positive, charge may be positive, it may be negative। So when you are taking algebraic sum of charges, you have to consider sign। For example, हमारे पास एक बॉल है जिसपे +q चार्ज है, हमारे पास दूसरा बॉल है जिसपे -q चार्ज है। अब मैं इन दोनों को टच कर देता हूं, मतलब कंबाइन कर देता हूं। व्हाट इज टोटल चार्ज? 0। यू कैन नॉट राइट q + q 2q, नो, बिकॉज one charge is negative। So when you are summing up, adding up, then you have to take into consideration sign also। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बेसिक से इसलिए बताता हूँ क्योंकि JEE नीट में हर एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए। ये जो मैंने बताया वो बताना चाहिए। टोटल चार्जेस 0, क्योंकि टोटल चार्जेस Q - Q, इतना पता होना चाहिए, राइट? यू शुड नो दिस थिंग ऑलवेज। ओके, तो टोटल चार्जेस 0, शून्य, राइट। मासेस के केस में ऐसा बोल सकते हैं कि हम नहीं बोल सकते। मासेस के केस में यू कैनॉट से, मासेस में आप बोलोगे एक का मास m, दूसरे का मास m, तो टोटल मास 2m, ट्रू। बट इन चार्जेस you have to take into consideration signs। then it is interesting that you compare additive properties of masses and charges। हम लोग ऑलरेडी कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आपने केमिस्ट्री में भी सीखा होगा, फिजिक्स में मैंने बताया था एक बार, that any atom, by the way atom का मतलब ही था indivisible which cannot be further divided। तो एटम जो था उसको बेसिक यूनिट माना गया था मैटर का। बट एनीवेज हमको बाद में पता लगा कि एटम में there is a nucleus which is positively charged, then there are electrons which are moving around positively charged न्यूक्लियस। फिर हमको बाद में ये भी पता लगा कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। फिर हमको और पता लगा कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। फिर हमको पता लगा कि क्वार्क के टाइप भी है। सो एनीवेज we'll talk about that also, but important is this कि हमारे पास एक एटम में न्यूक्लियस है। थोड़ा बड़ा दिखा देता हूँ न्यूक्लियस को। इट इज बेटर दैट वी शो इट लिटिल बिग। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स positively charged और neutrons neutral charge है, and then electrons are orbiting in more or less circular orbit। वैसे actually in reality electrons exhibit wave nature when they are in orbit। we'll talk about it sometimes later। तो अभी इलेक्ट्रॉन का भी मास, प्रोटॉन का भी मास, न्यूट्रॉन का भी मास। तो जब आप टोटल मास की बात करते हो ऑफ एन एटम, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इस न्यूक्लियस में, अगर मैं हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लूं, हाइड्रोजन एटम में देयर इज ओनली वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो न्यूट्रॉन। ओके, तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कहाँ से आएगा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, रफली इलेक्ट्रॉन। मैं रफली बात कर रहा हूँ। ओके, I am just telling you very loosely, it is a loose statement। Why it is loose statement वो आपको समझेगा बाद में।
जब हम लोग बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे 12th में, तब समझेगा कि दिस इज एक्चुअली नॉट करेक्ट, बट हम लोग फिलहाल समझने के लिए, राइट। तो टोटल मास कैसे निकाला हमने? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन and mass of proton. But when I talk about charge, overall atom in general is neutral. मतलब ये हो सकता है कि एक बॉडी के ऊपर 2, 3, 4 पार्टिकल है और टोटल बॉडी का मास आएगा m1, m2, m3 से, जैसे मैंने पहले आपको बताया। लेकिन एक सेम बॉडी पे मैंने चार्जेस डाल दिए, तो इस केस में हमको साइंस देखने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट टोटल चार्ज कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू कंपेयर एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मासेस एज वेल एज चार्जेस। तो बॉटम लाइन ये है दैट while adding charges, please look at the signs. इलेक्ट्रॉन बोला है तो माइनस ही लेना पड़ेगा, प्रोटॉन बोला है तो प्लस ही लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड टेलिंग यू सो मच इन डिटेल, राइट। तो लेट अस पुट दिस पॉइंट बाय पॉइंट। बहुत सिंपल टॉपिक है ये, इट्स एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, और ये सब आपका ऑलरेडी हुआ होगा कवर, बट इट्स माय ड्यूटी टू टेक इट अगेन, सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग थिंग्स दैट यू मस्ट हैव लर्नड इन स्कूल। और स्कूल्स में इतना तो होता ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्योंकि मुझे याद है हमें एक्सपेरिमेंट था वुल और ग्लास रॉड का, वो रब करना था एंड समथिंग लाइक दैट, दैट आई रिमेम्बर। सो ये हुआ ही होगा आपका। ओके, सो 10.3 basic properties of electric charges, and don't take it lightly. मुझे पता है आपको ये सब पता है, but it is important for me to take all this here. Otherwise, you may end up with getting confused when you will solve numericals. And first basic property that we just spoke about is additive nature of charges. Okay. All right. So electric charges are additive, as we already know. Electric charges, electric charge is additive in nature, similar to mass, similar to mass. Then the total electric charge on a body, or on an object is equal to the algebraic sum of all the electric charges distributed on different parts of the object, okay। तो बेसिक्स फर्स्ट, ये बहुत सिंपल सा चीज है, एक्सट्रीमली सिंपल थिंग, राइट। बट देन एज आई टोल्ड यू, वी नीड टू कंसिडर the signs of charges, because charges are also positive, they're also negative. So while taking the algebraic sum, the sign of course by sign I mean positive or negative,
the sign of electric charges must be taken into account. Must be taken into account. Right. For example, if you have two bodies, if two bodies have equal and opposite charge, equal and opposite charges, then the net charge on the system is zero. राइट तो दिस इज सफिशिएंट, इससे ज्यादा हमको मेंशन करना नहीं है, एग्जाम में कोई ये चीज पूछने नहीं वाला आपको, बट इट इज आई एम बाउंड टू टेल यू दिस, आई एम बाउंड टू पुट दिस इन नोट्स, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू प्लीज एक्सप्लेन एडिटिव नेचर ऑफ चार्जेस, कोई नहीं पूछने वाला, इट इज जस्ट दैट यू रिमेंबर, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त ये चीजें लगेगी हमको. ओके, या सो interestingly what we can say is, just a minute, yeah, so the total mass of an object is always positive, but the total charge on an object may be the total charge on an object may be positive or negative or even zero. हो सकता है ना, अगर +10 कूलम -10 कूलम कर दे तो खत्म, +10 में से -8 किया तो +2 बचा तो पॉजिटिव, +10 में से -12 किया तो -2 कूलम बचा तो नेगेटिव. सो टोटल चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और इवन जीरो. ओके, देन देयर इज समथिंग अगेन वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत बेसिक चीज है, और ये पर्टिकुलर चीज आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट इंजीनियरिंग में. जब मैं पढ़ाता था तो ये वर्ड वहां पे अपीयर हुआ, then the word was quantization of charges or of charge, and I was shocked to see that nobody knew what is the meaning of quantization. तो quantization का मतलब पता होना चाहिए, right? बहुत easy concept है, if you understand this thing, I mean it is very simple, बहुत बहुत simple चीज है ये. What do we mean by quantization basically? क्वांटाइजेशन मतलब डिस्क्रीट नेचर इन शॉर्ट. तो बेसिकली होता क्या है, देयर इज एन एक्सपेरिमेंट विच विल नॉट बी टेकन हियर क्योंकि इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ द सिलेबस. द एक्सपेरिमेंट इज बेसिकली कॉल्ड एज मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. तो मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमको ये पता लगता है दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज, सबसे छोटा चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So the minimum value of charge on an electron is this. Okay, ये जो चार्ज है 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, और कूलम आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज है बेसिकली. इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री चार्ज, मतलब इससे छोटा कोई चार्ज हो नहीं सकता, दैट इज व्हाट इट मींस. सो दिस इज एलिमेंट्री चार्ज. तो as an example, I'll take as an example, ये आपको अच्छे से समझेगा अभी. For example, if you know
स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम मैंने अभी भी बताया था दैट एंड हाइड्रोजन एटम हैज, क्या आता है हाइड्रोजन एटम में, देयर इज वन प्रोटॉन inside nucleus and there is one electron in the orbit. Okay, total charge is 0 of course, right? अब अगर मैं इसमें एक प्रोटॉन ऐड करता हूं तो इस सिस्टम का चार्ज कितने से बढ़ेगा, E से बढ़ेगा। ओके, मैं अगर और एक प्रोटॉन ऐड करता हूं तो और एक बार E से बढ़ेगा। मैं अगर और एक बार प्रोटॉन ऐड करता हूं, इट इज जस्ट अ थॉट एक्सपेरिमेंट। तो इफ यू नोटिस क्या हो रहा है, a charge, if you are putting electron or proton in an atom, चार्ज हमेशा E अमाउंट से बढ़ते जाएगा, E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, ऐसा ही होते जाएगा। इट कैन नॉट बी लाइक 0.001 टाइम्स ऑफ E, राइट? तो the charges on any body, any atom, any conductor can be increased only as an integral multiple of E, और इस पर्टिकुलर फेनामेना को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, विच सिंपली मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी कंडक्टर पे, किसी भी एटम पे अगर चार्ज बढ़ाना है या कम करना है तो इट कैन बी डन ओनली इन स्टेप्स ऑफ E, एंड E इज डिफाइंड एज charge on electron which is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, and that is called as elementary charge. elementary मतलब basic, इससे छोटा नहीं हो सकता। this particular phenomena of increasing or decreasing charge by an amount E is called as quantization of charge। बहुत सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पे। सो क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये भी सुना होगा फोटॉन्स, उसको क्वांटा भी बोलते हैं ना, फोटॉन्स आर आल्सो कॉल्ड एज क्वांटा, सुना होगा ये, क्वांटम थ्योरी वहीं से ये वर्ड आया है। तो इफ यू नो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोलते हैं उसको, इन दैट केस व्हाट डज क्वांटाइजेशन मीन। अब जब आप लाइट चालू करते हो, लाइट मतलब एनी काइंड ऑफ लाइट, सो यू कैन आल्सो स्टार्ट एलईडी बल्ब, और आप अदरवाइज इफ यू स्टार्ट अ नॉर्मल ट्यूब लाइट, कोई भी फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन विजिबल रेंज। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ ट्यूब लाइट, इसको चालू किया, व्हाट वी सी, लाइट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस, करेक्ट, कंटिन्यूअसली, बट दैट इज नॉट ट्रू। What is truth then? Truth is light is coming out in the form of small packets of energy, but these packets are coming out from every part of the tube light and they are coming out continuously, मतलब one after the other without any delay of time। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि लाइट कंटिन्यूअसली आ रहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू। तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स बाहर निकल रहे हैं लाइट के, इसको भी आप बोलते हो क्वांटा, एंड ईच क्वांटा हैज स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन बाय E इज इक्वल्स टू h न्यू। ये हमने बहुत बार यूज किया है इन जेडब्ल्यू क्लासेस, नीट क्लासेस, राइट? इसका मतलब एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट से, आई यूज वर्ड्स वेरी केयरफुली सो यू हैव टू लिसन टू एवरी वर्ड केयरफुली, एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ लाइट से हमेशा मिनिमम एनर्जी जो एमर्ज हो सकता है, जो एग्जिट हो सकता है, दैट इज E इक्वल टू एच न्यू। इससे छोटा एनर्जी उसमें से आएगा ही नहीं। हाँ, मैं अगर ट्यूबलाइट चेंज कर देता हूँ तो ठीक है ना, बिकॉज E इक्वल टू एच न्यू मतलब एच सी बाय लैम्बडा, क्योंकि न्यू इज सी बाय लैम्बडा। तो वो जो लाइट सोर्स है वो कौन सा वेवलेंथ इमिट कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। पर मैंने इसलिए बोला एक स्पेसिफिक सोर्स ऑफ रेडिएशन, सोर्स ऑफ लाइट से जितने भी पैकेट्स निकलेंगे दे विल हैव एग्जैक्टली दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, E इक्वल टू एच न्यू। तो उसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ
electromagnetic energy, or these small packets of light are called as photons, or they are also called as quantas. तो ये जो क्वांटा वर्ड है, इट एक्चुअली मीन्स डिस्क्रीट नेचर, मतलब क्या, एक पार्टिकल फिर दूसरा फिर तीसरा, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है बेसिकली. सो जब हम लोग क्वांटाइजेशन की बात करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चार्ज, इसका मतलब क्या होता है, दैट चार्ज इज नेवर कंटिन्यूअस, राइट. तो चार्ज जब भी आप एक कंडक्टर पे, फॉर एग्जांपल, आप जब मोबाइल चार्ज करते हो तो क्या करते हो, है ना, मोबाइल चार्ज लगाया, पहले 0% था, फिर 1% था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, राइट. बट एक्चुअली इन रियलिटी क्या हो रहा है, एज सुन एज यू कनेक्ट चार्जर टू योर फोन, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग सप्लाइड टू द कैपेसिटर इनसाइड योर फोन. मतलब बैटरी में जो बैटरी है, मतलब उसके अंदर जो कैपेसिटर है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डिपॉजिट हो रही है. और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होने का मतलब क्या होता है, दैट द कैपेसिटर इज स्टोरिंग E plus E plus E plus E plus E, right? So this is what do you mean by quantization. The charge on your battery will always increase or decrease by plus E or minus E basically. So this particular phenomena of discrete nature of charge is called as quantization of charge. बहुत simple सा idea है, right? And we should not say anything more on this because this is what it means. It is very simple. So the minimum value of the charge on an object बोलने से तो better रहेगा, the minimum value of charge on an electron as determined by Millikan's oil drop experiment is E equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb, where C is coulomb, and coulomb you already know is SI unit of charge is coulomb, which is SI unit of charge, right. Then this particular value of charge 1.6 into 10 power minus 19 coulomb is called as elementary charge. So this is called elementary charge. Okay, then what we know is protons are positively charged, electrons are negatively charged. They have different masses. ये important है. Mass of proton and mass of electron is different, but charge on proton and charge on electron are same in magnitude, but just opposite in sign. So which means कि जब भी हम किसी भी एक एटम में प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वी आर इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन दैट एटम बाय प्लस क्यू प्लस ई और माइनस ई. So pretty simple thing. I am sorry but initially ये theory है, मुझे भी थोड़ा बोर होता है बट अब पढ़ाना तो पड़ेगा. Just saying, फिजिक्स का भी बोर नहीं होना चाहिए. आई एम जस्ट सेइंग, बट अभी थ्योरी है तो बताना पड़ेगा. आई कांट हेल्प इट सिंस protons and electrons, you know, they are basic elements. So since protons which is positive and electrons which is negative, they constitute matter, because matter is made up of atoms and atoms are made up of protons and electrons basically.
So are the charged particles charged particles constituting matter? The charge on an object must be integral multiple of plus or minus e और माइनस ई। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है ये, अगर एक एटम पे मैं एक प्रोटॉन डाल रहा हूँ तो प्लस ई से उसका चार्ज बढ़ेगा, अगर इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूँ तो माइनस ई से उसका चार्ज कम होगा। दिस इज व्हाट इट मींस बेसिकली, राइट? सो सिंपल थिंग। सो देन further what we can say is charge on an object can be increased or decreased in multiples of e, in multiples of e, it multiples of e, and it is because during the charging or discharging process, charge on an object can be increased or decreased by, can be increased or decreased by e. It is because during the process of charging or discharging, an integral multiple of number of electrons, an integral number of electrons can be transferred from one body to another. And this phenomena of increase or decrease of charge in multiples of e is called as quantization of charges, or discrete nature of charge. Done. If you ask me in simple language, मैं बोलूँगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब मैं किसी भी एक कंडक्टर से 0.001 e या 0.05 e या 0.025 e नहीं निकाल सकता, ना ही उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मुझे अगर ऐड करना है या उसमें से चार्ज निकालना है तो इट ऑलवेज हैज टू बी इन मल्टीपल ऑफ e. That is all what you have to write about in this case of quantization of charge. बहुत सिंपल है, extremely simple. There's nothing. Now we are going to move towards something which is really important. So here onwards, I believe इस टॉपिक के आगे हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू हो रहा है। ओके, तो पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं एक्सपेरिमेंट, ग्लास रॉड और वुल का एक्सपेरिमेंट। तो व्हाट यू कैन डू इज, एक ग्लास रॉड लो, एक वुल का क्लॉथ ले लो, सिल्क क्लॉथ ले लो बेसिकली, and then rub that glass rod with silk. तो ग्लास रॉड पे जितना पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, कहां से? सिल्क से।
उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क पे रहेगा। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। फिर क्या हुआ? इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, और इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सिस्टम टू अनदर पार्ट ऑफ द सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय conservation of charges, right? So conservation of charge tells you charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one part of the system or one body to another body, and which means that for an isolated system, the total charge is always conserved. What do you mean by isolated system? मेरे पास एक सिल्क का टुकड़ा है, क्लॉथ, और एक ग्लास रॉड है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है. दैट इज व्हाट आई मीन बाय आइसोलेटेड. So we don't have anything in proximity near to that system. So in such cases, you say the system is isolated from its surrounding. Okay. तो conservation of charge is very simple thing. तो आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा. बाय द वे, अगर आप अभी कभी प्लास्टिक के चेयर पे बैठे होंगे, समटाइम्स यू फील करंट, तो वही हो रहा है. चार्जेस आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट प्लास्टिक चेयर ऑन टू योर बॉडी, बट देन जितना चार्ज आपके बॉडी पे आया उतना ही चार्ज उस चेयर ने भी लूज किया. सो आइडियली total charge is conserved. So this is what do you mean by conservation of charges. So we'll just put it in theory. This is the starting point of electrostatics for me. I would say यहाँ से अब electrostatics चालू होगा. So 10.3.3, I am just numbering according to your textbook. It really doesn't matter. जितना हमको सिलेबस कवर करना है मैं उतना करवाने वाला हूँ. Even if it is deleted for this year, अगर मुझे लगा important है तो I am going to take it. तो this is one more thing. जो पहली बार लाइव आए हैं, you are strictly advised not to follow any other source of theory notes. जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ उतना ही sufficient है. वो notes ही आपको follow करने हैं. You are not supposed to, and please do not follow textbook. This is a sincere advice to you. जितना मैं notes दे रहा हूँ, क्योंकि ये notes मैं 3-4 books में से बनाता हूँ, और basically either to save from books. जब the best practice of making notes is to write down what you have understood. तो मेरे किसी भी 2 बैच के नोट्स, अभी इस साल तो सब बैचेस पहली बैच में लाइव होता है, बाकी में रिकॉर्डिंग होता है, वही रिकॉर्डेड जाता है दूसरे बैचेस को. तो इस साल हर एक बैच के नोट सेम होंगे, बट नॉर्मली किसी भी साल ऑफलाइन बैचेस में किसी भी 2 बैच के नोट्स भी सेम नहीं होते. फिजिक्स सेम होता है, लिखने का तरीका अलग अलग है. तो आई एम टेलिंग यू जस्ट टू फॉलो दिस, और मार्क्स आपको मिलेंगे. कोई मार्क्स नहीं काट सकता. दिस इज माय गारंटी. अगर आपके कॉलेज में मार्क्स डिडक्ट हुए तो आई विल कम विथ यू एंड यू विल get marks, provided you write correct physics. So we'll see what is conservation of charges. So regarding notes, please follow only this. This is what I'm saying. That's it. तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया what is conservation of charge. You should know it is simple thing. So charge can neither be created nor be destroyed. It can just go from one part to another part of the body, or one body to another body. So if a system is isolated, जैसे एक ग्लास रॉड लिया, एक सिल्क का क्लॉथ लिया, रब किया, सिल्क से चार्ज ट्रांसफर हो गया, पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पे, राइट? तो ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज हो गया, सिल्क जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया, तो टोटल चार्ज इज स्टिल कंजर्व्ड. This is what it means. So let us write down statement. So conservation of charge tells us that electric charge can neither be created nor be destroyed. Can neither
be created nor be destroyed, but it can be transferred from one part of a system or a body to other part to other part of the system. So the total charge of an isolated system remains conserved or remains constant, right? And to support this statement, we can write example of glass rod and silk. So for example, if two bodies like glass rod and silk are rubbed together, a small amount of charge is transferred from one to the other. In this case, glass rod becomes positive, glass rod becomes positively charged, and silk becomes negatively charged, but the total charge is is conserved. Okay, so what we will do now is just to quickly revise what we have seen so far, और कल से start होगा Coulomb's law. तो कल से we will be talking real physics in electrostatics, क्योंकि फिर हम लोग देखेंगे what is the formula for force, what is the direction of that force, what is dielectric constant, what happens when you keep two charges in water for example, क्योंकि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस आपको याद होना चाहिए जब हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस लिखे थे, कौन से टाइप ऑफ फोर्सेस लिखे थे? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स. वहां पे एक स्टेटमेंट मैंने मेंशन किया था दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम. मतलब आपने दो मासेस को कहां रखा है मैटर नहीं करता, है ना. दो मासेस को आपने वाटर में रखा है, वैक्यूम में रखा है, कहीं भी रखा है, डजंट मैटर, द फोर्स रिमेन्स, gravitational force of attraction remains constant. But when you keep two charges in water, in air, in glass, in kerosene, then the force of repulsion or attraction will change because it depends on the medium, right? So this is all that we will see in the next session. How the force will change depends on a quantity which is called as dielectric constant. वो हमारा कल होगा. तो for the time being we are just supposed to revise. तो आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही बेसिक लिया है मैंने. इलेक्ट्रो चार्जेस, स्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट. So we will be talking about charges at rest in this chapter. इस पूरे चैप्टर में कहीं पे भी चार्जेस मूव हो रहा है मतलब करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी मेंशन भी नहीं होने वाला है. वी विल बी स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट चार्जेस एट रेस्ट. मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूं क्योंकि
इवन मास्टर्स लेवल तक आते आते बहुत लोगों को पता ही नहीं होता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. Okay, I don't want you to be one of them. You should know exactly what you are studying. So then we saw what are the basic properties of electric charges. सबसे पहला additive nature. दो चार्जेस है, दोनों को एक सिस्टम में मतलब एक स्पीयर के ऊपर डाल दिया तो टोटल चार्ज ऑफ स्पीयर इज Q1 प्लस Q2. फिर तीसरा डाल दिया तो टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. फिर एक नेगेटिव चार्ज डाल दिया तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4. सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. The total charge on an object is algebraic sum of electric charges on different parts of that conductor. Only thing is, while taking the algebraic sum, the sign of the charges need to be taken into consideration. Mass में तो नहीं होता वैसा. Then quantization of charges का simple meaning ये है कि किसी भी एक object में charge add करना होगा या वहां से reduce करना होगा, so it can be done only in integral multiples of E. E is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. That is called as elementary charge. And this phenomena of increase or decrease in electric charge by an amount, specific amount E, is called as quantization of electric charge. Then lastly, we saw conservation of charges. It tells you that electric charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred from one body to another or from one part of a body to other part of the same body. An example, we have taken glass rod and silk, right? So sufficient for today.